ब्रिक वॉलिंग तक हो गया था। अब हमें वॉलिंग स्कैफोल्ड के बारे में पढ़ना था। अब देखिए, वी हैव कंप्लीटेड टिल ब्रिक वॉलिंग and now we have to study about the various other parts which are used in the shaft sinking, like the walling scaffold and the rider and many other things. Okay, so walling scaffold, the what is the basic requirement of the walling scaffold? Why do we need a walling scaffold? Sorry, we basically need walling scaffold so that brick walling can be done easily. Clear? Brick walling, for doing the brick walling we used to do, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारा यहाँ पे वॉलिंग स्कैफोल्ड बेसिकली सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। भाई घर बनवाते हो तो अगर मुझे यहाँ तक की दीवार की जोड़ाई तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर इसके ऊपर की दीवार की जोड़ाई मुझे करनी है तो वो कैसे करूंगा मैं? ठीक है, वो जोड़ाई कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके हम जोड़ाई का काम करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। बेसिकली if you want to construct a brick wall, then up to the height where you can reach easily, you can do on standing the ground only, but above that you have to make a platform so that you can reach the upper height and make your the height of your brick wall can be made higher. Okay, so in that case we used to have that platform while making our houses. Similarly, a platform which is used in the shaft sinking, during shaft sinking, that platform is called the walling scaffold. Okay, a platform which is used for the brick walling in the shaft sinking, that platform is called the walling scaffold basically. Okay, so walling scaffold, it is a platform made up of sal wood of 0.3 meter into 0.3 meter square members of sal planks. Okay, of sal planks. Okay, these square members of sal planks has basically an opening of the 2 meter into 2 meter for the passage of the sinking bucket. Okay, and the scaffold has two ropes with the help of which scaffold is being suspended. Okay, and the double drum winch is used for its raising and lowering of the scaffold, and the dia of the scaffold is equal to the finished dia. अब देखिए होता क्या है कि हमें ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्या नाम दिया उस प्लेटफॉर्म को? मैंने वॉलिंग स्कैफोल्ड नाम दिया। ठीक है, अब ये जो वॉलिंग स्कैफोल्ड है ये किसका बना होता है? बेसिकली लकड़ी का बना होता है। ठीक है, स्क्वायर मेंबर्स होते हैं बेसिकली लकड़ी के, इसमें उन लकड़ी के मेंबर से हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब लकड़ी का जो साइज होता है, स्क्वायर शेप में लकड़ियां होती हैं, है ना, और वो जो लकड़ी के पटरे होते हैं 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर के होते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो पूरा का पूरा वॉलिंग स्कैफोल्ड आपने बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वॉलिंग स्कैफोल्ड जो है आपका, इसमें एक बीच में ओपनिंग होती है, 2 मीटर बाय 2 मीटर की ओपनिंग होती है, जिससे कि आपका सिंकिंग बकेट अंदर बाहर होता रहता है। स्कैफोल्ड को दो रस्सियों की मदद से लटकाकर रखा जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जिसे रेज और लोअर करने के लिए डबल ड्रम विंच का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैफोल्ड का डाया किसके बराबर होता है? फिनिश्ड, जो शाफ्ट का फिनिश्ड डाया होता है हमेशा स्कैफोल्ड का डाया उसके बराबर होता है। तो इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब देखिए, अब होता यूं है, जस्ट सपोज आई विल मेक अ डायग्राम just for your imagination purpose. Okay, just suppose that this is your shaft. Okay, this is your shaft. Your walling scaffold is somewhere at this point in the shaft. Okay, you have 4 clamps like this, you have 4 clamps like this. Okay, these clamps are attached to a rope like this. Okay,
4 clamps. Just suppose that like this. This is your just imagine this is your walling scaffold. It will be like this in the shaft. Okay, in this manner it will be situated in the shaft. Just suppose it has 4 clamps over here, 1, 2, 3, 4. Okay, in these 4 clamps I will attach the chain, single linked chain I will attach to these 4 clamps. And just imagine 2 single link chains come one from each clamp. Okay, one from each clamp. Okay, like this 2 single link chain come, and those 2 single link chain from one side of the walling scaffold combine and connect to a single rope which is coming from the headgear. Okay, similarly from this side also 2 single link chain go upwards, and they connect to a rope which is coming from the headgear. In this manner 2 ropes are coming from the headgear. From these 2 ropes 4 single link chains are connected, 2 single link chains from each rope. Okay, have you understood? Then raise your hand quickly, do it quickly. Okay, so in this manner walling scaffold is suspended into the shaft. In this manner it is suspended into the shaft. तो अब आपका यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो मान लीजिए जस्ट आपका वॉलिंग स्कैफोल्ड है। अब इस वॉलिंग स्कैफोल्ड में 4 क्लैंप लगे हुए हैं, 4 कॉर्नर्स में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, चैन, हर एक क्लैंप में एक चैन लगाया। अब ये दो जो इधर के 2 क्लैंप्स हैं, इनमें से चैन गई किससे कनेक्ट हुई, रस्सी से। ठीक है, वो रस्सी कहां से आ रही है, हेड गियर से आ रही है। ठीक है, सिमिलरली आपके ये 2 क्लैंप्स हैं, इन दोनों में सिंगल लिंक, हर एक में एक सिंगल लिंक चैन लगाया, और ये 2 चैन जाके दोनों चैन एक सिंगल रस्सी इधर से कनेक्ट हो गई। तो हुआ क्या, 2 रस्सी हेड गियर से आई, और उन दोनों रस्सियों में हर एक रस्सी में 2 सिंगल लिंक चैन है, और वो दोनों सिंगल लिंक चैन एक एक क्लैंप में जाके अटैच हो जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से वॉलिंग स्कैफोल्ड को जो है तो सस्पेंड किया जाता है। कहां पर, शाफ्ट में सस्पेंड किया जाता है। सो इन दिस मैनर वॉलिंग स्कैफोल्ड इज सस्पेंडेड इनटू द शाफ्ट। ओके, नाउ this walling scaffold has 4 sliding bolts so that the platform could be kept steady. Okay, for example, when you will make a platform for brick walling, or for making a wall of the brick, then in that case you will make a platform at this level. Okay, for supporting this platform you will have raise the pillars of wooden pillars you will make. Okay, like prop like pillars you make. On this wooden props this platform is supported, but it may move like this and you will fall. So for extra support there is a bamboo which is inserted inside the wall, so that it could not move like this. A bamboo is inserted inside the wall, making holes inside the wall. Okay, so in this manner we used to provide the support. Similarly, in the walling scaffold it also has 4 sliding bolts at each corner. 1, 2, 3, 4 at each corner. These sliding bolts, it is a sliding bolt. Suppose that it is too long, but you have to just imagine. Suppose that this sliding bolt is like this. In this manner it is situated in the walling scaffold. As soon as it goes inside the shaft, this sliding bolt will be inserted in this manner. It will be inserted into the sides of the shaft. Similarly, another sliding bolt will be inserted into the shaft. Similarly, this side also. In this manner you can keep your walling scaffold steady. Okay. So from one position of the scaffold you can approximately
do the walling that can be done is 1.3 meter. Up to 1.3 meter height you can do the walling. Okay, and after every 9 to 6 meter intervals, buttons are fixed into the shaft sides so that the cables, delivery pipes and the compressed air pipes can be सपोर्टेड. ओके, अब देखिए आपका जो वॉलिंग स्कैफोल्ड होता है उसमें चार क्या होते हैं, स्लाइडिंग बोल्ट होते हैं चार. अब वो स्लाइडिंग बोल्ट आपके कहां पर जाते हैं, शाफ्ट के साइड्स में ऐसे घुस जाते हैं, जिससे कि आपका जो स्लाइड वॉलिंग स्कैफोल्ड है वो ऐसे हिलता नहीं है. ठीक है, वो फिक्स हो जाता है, स्टडी हो जाता है, अब वो किसी चीज पर टिका हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है कि आपका बैलेंस बना रहता है और इधर उधर मूव नहीं करता है. अब हर 9 से 16 मीटर के इंटरवल पर हम क्या लगाते हैं, बंटन्स लगाते हैं, ताकि केबल्स को, डिलीवरी पाइप्स को, कंप्रेस्ड एयर पाइप्स को सपोर्ट किया जा सके. और आप अगर वॉलिंग स्कैफोल्ड को जैसे इतनी हाइट पर मैंने बनाया, अब यहां से मैं 1.3 मीटर की हाइट तक का वॉलिंग कर सकता हूं एक बार में. ठीक है, दीवार खड़ी कर सकता हूं एक बार में, एक बार स्कैफोल्ड की पोजीशन सेट करने पर. एज यू कैन सी ओवर हियर, this is your walling scaffold. Okay, here the square shaped cell planks are there, and there is a opening of 2 by 2 meter, 2 meter into 2 meter opening is there, so that the bucket, this opening is for the bucket. Here you can see the sliding bolts. These are the sliding bolts which get inserted into the shaft sides. Okay, these are the cross pieces which will attach all the sal planks together. This is your permanent lining. Okay, all around the shaft, this is your permanent lining. Okay, clear? And after that, the brackets are there, hinges are there, which will combine or keep your complete walling scaffold together. And there is an eye bolt. What do you mean? What it is? It is an eye bolt which works as a clamp for attaching the single link chain to it. ओके, अब यहाँ पर जैसा कि आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, इसमें आपका ये क्या हो जाता है, स्लाइडिंग बोल्ट हो जाता है. 2 बाय 2 मीटर का आपका क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है. ये साल प्लैंक्स है, इनको एक साथ रखने के लिए आपका क्या लगाया गया है, आपके ब्रैकेट्स, आपके क्रॉस पीसेस लगाए गए हैं. ठीक है, साल के ही, उसके साथ ही आपके हिंजेस हैं, ये लोहे का होता है. ठीक है, और इसकी ये जो है तो पूरे के पूरे फ्रेम के स्ट्रक्चर को पकड़ के रखता है मजबूती से. इसके साथ ही जो मैंने सिंगल लिंक चेन में जो क्लैंप लगाए थे, वो क्लैंप आपका क्या कहलाता है, आई बोल्ट कहलाता है. ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका परमानेंट लाइनिंग हो जाता है. अब यहां से देखिए, आपका ब्रिडल चेन्स की मदद से मैं आई बोल्ट में इसको कनेक्ट करता हूं. ठीक है, अब नीचे साइड क्या होता है, मेरा एंकर बोल्ट होता है. ठीक, एंकर बोल्ट लगा देता हूं. फिर ये आपका क्या कहला रहा है, स्कैफोल्ड रोप है. इसमें आपका रबड़ लगा हुआ, रबड़ की रिंग्स लगी हुई हैं. फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ब्रिडल चेन आता है. तो ये आप याद रख सकते हैं, ये एक सीरीज बनाता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, स्कैफोल्ड होता है, स्कैफोल्ड रोप होता है. उसके बाद आपका होता है रबर की रिंग्स, रबर रिंग्स. ठीक है, उसके बाद आपका होता है ब्रिडल चेन्स, एंड उसके बाद आपका होता है स्कैफोल्ड. बीच में चाहे आई बोल्ट लगा दो, आई बोल्ट. फिर उसके बाद आता है आपका स्कैफोल्ड. आई बोल्ट और स्कैफोल्ड सेम भी रख सकता है कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में, स्कैफोल्ड. ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अच्छा अगले की तरफ रखना था. ठीक है, हो गया इतना ही. ठीक है, ये पूरा आपका हो जाता है. ठीक,
As you can see over here, this is your walling curve. This walling curve holds the complete brick walling over here. Okay, it will does not allow your brick complete brick walling to move anywhere. It will provide extra support from the bottom of it. Okay, so in this manner you can understand each and everything. Now we will talk about the rider. Basically, to prevent the sinking in the while to prevent the swinging of the buckets while shaft sinking, rider is used. Basically, we can during shaft sinking we cannot use the rider, but sorry, we cannot use the guide ropes, but we can use the riders so that the swinging can be avoided. Okay, तो बकेट को स्विंग होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? राइडर का इस्तेमाल किया जाता है। गाइड रोप्स का हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, ठीक है, शाफ्ट सिंकिंग के समय, बट 150 मीटर की अधिक गहराई होने पर गाइड रोप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसमें हैवी वेट नीचे साइड में दे के उसको जो है तो हमें टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लॉक्ड कोइल रोप्स, लॉक्ड कोइल का भी इसके साथ यूज किया जा सकता है, राइडर के साथ लॉक्ड कोइल रोप्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉलिंग स्कैफोल्ड को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो भी रोप्स आप यूज कर रहे हैं उस रोप्स में आपका राइडर लगा हुआ होता है ना। इस जब बकेट को वॉलिंग स्कैफोल्ड से भी ज्यादा नीचे भेजा जाता है तो उस केस में राइडर स्कैफोल्ड रोप्स के कैपल में अटक जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम्स की मदद से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले इंग्लिश में बता दूं। Basically, during shaft sinking, we cannot use the guide ropes. In some cases, if the depth of the shaft is more than sinking shaft is more than 150 meters, then in that case we can use the guide ropes. But in that case also, the guide ropes must be provided with heavy weights at the bottom so that they can be kept tight against the against the buckets or the cages which are being to be raised or lowered. Okay, and we can use the rider. It is a very convenient to use, and it is attached to the walling scaffold ropes, and locked coil ropes can also be used along with it. Okay, basically when the bucket has to be lowered below the walling scaffold, at that time the rider remains at the scaffold rope. It will just stop at the capel of the scaffold rope, and the rope moves from the rider cone. Okay, अब आपका जो रोप होता है वो रोप राइडर जो आपका बेसिकली बकेट होता है वो रोप राइडर कौन से होते हुए गुजरता है। स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर एक प्रकार का शीव होता है जो रोप को गाइड करता है और ओवरवाइंड को प्रिवेंट होने से रोकता है ना। विद द हेल्प ऑफ द राइडर बकेट कैन बी रेज्ड और लोवर्ड एट ग्रेटर स्पीड। आपका राइडर अगर होता है तो राइडर की मदद से आप क्या कर सकते हो? बकेट को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ रेज या फिर लोअर कर सकते हैं, ठीक है। अब राइडर के बारे में देखते हैं। दिस इज योर राइडर। ओके, this is your rider cone. Basically it is a type of sheave which will guide the rope and prevent the overwinding and guide the rope to straight to go down in a straight manner. Okay, this is your rider. This is your rider. As you can see this shape. This complete shape is your rider. Okay, it has, if you imagine this portion which is attached to the rope, it is like this hollow, cylindrical hollow. Then suppose that this is your rope. Okay, scaffold rope. Okay, this is your scaffold rope. On the scaffold rope it is like this so that it could move or it could slide over it. Okay, in this manner it is placed in the four corners
इट इज अटैच्ड इनटू द स्कैफोल्ड रोप इन द 4 कॉर्नर्स। ठीक है, अब इस तरीके से 4 कॉर्नर्स में राइडर आपका वो स्कैफोल्ड रोप से अटैच्ड रहता है। ठीक है, अब जैसे ही आपका वॉलिंग इस जो बकेट है स्कैफोल्ड के नीचे जाता है तो उस केस में राइडर आके यहाँ पर जो रबड़ की रिंग्स लगी हुई थी स्कैफोल्ड रोप में वहां पर आकर रुक जाता है और उसके बाद आपका ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ये जो राइडर का कोन है इस कोन से होते हुए गुजर जाता है। ठीक है, इस कोन से होते हुए ये पूरा का पूरा गुजरता है। अब यहाँ पे बीच में आपका क्या लगा रहता है, आपका लगा रहता है स्पाइडर। ये स्पाइडर का काम क्या होता है, ये एक प्रकार का शीव होता है, शीव बोले तो पुली। देयर इज अ स्पाइडर प्रेजेंट in this rope, okay, rope of the bucket, in the rope of the bucket. This spider is basically a type of sheave which gets which will basically stop over here when the rope moves from the rider cone. Then in that case it will stop over this position and it will guide the rope to go straight downwards. Okay, अब यहाँ पे जैसे ही आपका राइडर यहाँ पे रुक जाता है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट नीचे जाता है, तो उस केस में स्पाइडर आके यहाँ पे अटक जाता है और ये एक प्रकार का शीव है, तो रोप इसके बीच में से होते हुए गुजरता है। रोप will move or rope will cross it further from inside it, okay, and it will guide the rope, और ये रोप को सीधा जाने में मदद करता है। तो ये आपका हो जाता है स्पाइडर। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन शाफ्ट सिंकिंग। Now you have to do the drilling and blasting during shaft sinking. So there is a thumb rule which is used while drilling and blasting in the shaft sinking. In the thumb rule, the number of holes in a ring which are drilled are the 3 times the dia of the shaft in meters. Okay, the number of holes that you have to drill for shaft sinking, then the number of holes in a particular ring shall be 3 times the dia of the शाफ्ट इन मीटर्स। ठीक है, तो आपका जब भी आपको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करना है शाफ्ट सिंकिंग की केस में, तो उस केस में एक थंब रूल चलता है कि कितने होल्स आपको एक रिंग में रखने हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो बोलते हैं कि जितना भी आपका शाफ्ट डाया है मीटर में उससे 3 गुना होल्स आपको एक रिंग में रखना है। ठीक है, अब होल्स को हैंड हेल्ड जैक हैमर की मदद से ड्रिल किया जाता है, जिसे कंप्रेस्ड एयर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। उस समय जो एयर प्रेशर होता है लगभग 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एयर प्रेशर वहां पर मेंटेन किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर को रबड़ के होस पाइप से सप्लाई किया जाता है और उस पाइप का जो डाया होता है 100 mm के आसपास उस पाइप का डाया होता है। ठीक है, now if you want to do the drilling and blasting in the shaft sinking, then there is a thumb rule in which the number of holes in a ring is decided on the basis of the shaft dia, and it is said that it must be 3 times the shaft dia in meters. Okay, the holes are drilled with the help of the handheld jackhammers. Okay, and these handheld jackhammers are operated by the compressed air and the air pressure is approximately 6 kgf per centimeter square. Okay, compressed air is supplied to the jackhammer drills with the help of the hose pipes, and the dia of these hose pipes is approximately 100 mm. Sorry. Okay, now if we talk about the hole dia, the dia of the hole which is drilled drilled over here is approximately 38 mm. If we talk about the dia of the holes, the dia of the holes is 38 mm. Okay, the dia of the holes drilled over here is 38 mm, and the depth of holes is 1.2 to 1.5 meter. 1.2 to 1.5 मीटर। ओके, डेप्थ ऑफ होल्स इज 1.2 to 1.5 मीटर। अब जैसे ही ड्रिलिंग आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, होल्स ड्रिल करते हैं जिसकी डाया होता है 38 mm, डेप्थ होता है 1.2 से 1.5 मीटर।
अब ड्रिलिंग के बाद वुडन प्लग्स से होल को कवर कर दिया जाता है. आफ्टर ड्रिलिंग होल्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द वुडन प्लग्स. ओके, एंड जिलेटिनस जो कि एक प्रकार का हाई एक्सप्लोसिव होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एजेक्स जी, ठीक है, सैंडस्टोन में बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगर हार्ड रॉक है तो उस केस में स्पेशल जिलेटिन्स का इस्तेमाल किया जाता है. So if the sandstone is present over there, then for blasting gelatinous high explosives are used, or if there is hard rock, then in that case special gelatin is used. Okay, and the quantity of explosive explosive is approximately 0.6 to 6 kg to 0.9 kg. ओके, तो एक्सप्लोसिव की जो क्वांटिटी होती है 0.6 kg से 0.9 kg के आसपास होती है, जो कि यहां पर यूज किया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द डिटोनेटर्स, अब यहां पे जो डिटोनेटर्स यूज होते हैं वो लो टेंशन डिटोनेटर्स होते हैं. ठीक है, ज्यादा हैवी डिटोनेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. द डिटोनेटर्स व्हिच आर यूज्ड ओवर हियर आर द लो टेंशन डिटोनेटर्स. वी डू नॉट यूज द हाई टेंशन डिटोनेटर्स ओवर हियर. ओके, इफ वाटर होल्स में स्टेमिंग का काम करता है, अगर पानी मौजूद है तो उस केस में वो स्टेमिंग का काम करता है वहां पे. ठीक है, अगर आपको अपने ब्लास्टिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उस केस में आप ड्रिल चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसके लिए हमें ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे पहले इनर रिंग को सबसे पहले ब्लास्ट किया जाता है. ठीक है, अब एक रिंग के शॉर्ट को जो है तो सीरीज में कनेक्ट करके रखा जाता है. फिर ब्लास्टिंग के पहले हम सारे इक्विपमेंट्स को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, जो भी लाइट वगैरह है, जो भी इक्विपमेंट है उसको ऊपर उठा लेते हैं पूरा का पूरा. इसके साथ ही सारे वर्कर्स को विड्रॉ कर लेते हैं और फोल्डिंग डोर्स को बंद कर दिया जाता है. Okay, so as we all know, low tension detonators are used after drilling. If you want to do the stemming, water is the best stemming material which can be used. But for the effective blasting, you can also use the drill chips, and the inner ring holes are blasted at the first, and each ring is connected in series. And before blasting, you have to remove or raise the equipments and the lights and the etc. Along with that, withdraw all men and close the folding doors. This much work you have to done before blasting. Okay, so in this manner, as you can see over here, in this manner, holes are drilled in the form of rings. This inner holes are called the sumper. Okay, and these ring of holes is blasted first. सिंगल लिंक चेन के बारे में बताएं. उसमें क्या बताना, सिंगल लिंक चेन होती है. एक बार YouTube पे सर्च करें, नहीं समझ में आता तो कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, फोटो भेज दूंगा. सिंगल लिंक चेन बस सिंगल लिंक होता है, बस उसमें कुछ अलग से थोड़ी होता है यार. तो बाकी बता दूंगा, देखता हूँ मैं और कुछ होगा तो. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, संपर होल्स को सबसे पहले ब्लास्ट किया जाता है. इनर रिंग के होल्स जो होते हैं उनको सबसे पहले ब्लास्ट किया जाता है. ठीक है, अब जो इनर रिंग्स होते हैं उनको हमने क्या कहा, संपर होल्स कहा. ठीक है, इनर रिंग के होल्स को इनर रिंग होल्स आर कॉल्ड द संपर होल्स. ओके, now blasting is done with the help of the heavy duty exploder at the surface, which is kept at the surface. After sumper ring is blasted, now we have to clear all the debris, we have to do the mucking. After that, the outer ring is blasted, and in one blast we used to get approximately 1.2 to 1.5 meter deep advance. Okay, 1.5 to 1.2 to 1.5 मीटर एडवांस वी कैन गेन इन वन ब्लास्ट. अब देखिए यहाँ पे होता है
कि आपका इनर रिंग्स को संपर होल्स कहा जाता है, संपर रिंग्स कहा जाता है। जैसे ही संपर रिंग ब्लास्ट होता है तो वहां पर हम मकिंग करते हैं, पूरा ब्लास्टेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं और उसके बाद आउटर रिंग्स को एक एक करके हम ब्लास्ट करते चले जाते हैं। अब एक ब्लास्ट में आपका जो एडवांस होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.5 मीटर का एडवांस अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, अब डेब्रिस को क्लीन करना है। जो भी ब्लास्टिंग के बाद मटेरियल हमें मिलता है, ठीक है, द ब्लास्टेड मटेरियल हैज टू बी क्लीन्ड अप, एंड फॉर क्लीनिंग दैट ब्लास्टेड मटेरियल वी विल यूज अ बकेट। ओके, अब हमें ब्लास्टेड मटेरियल को क्लीन करना है ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिंग को हम ब्लास्ट कर सके। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेसिकली बकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इन बकेट्स को, द बकेट्स विच आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द डेब्रिस is known as this is known as kibble or balk. Okay, the buckets which are used for the removal of debris are called kibble or balk or hoppet. They are known as किबल, बॉक और हॉपिट। अब जो बकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है डेब्रिस को मूव करने के लिए या फिर ब्लास्टेड मटेरियल को मूव करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, किबल, बॉक या फिर हॉपिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बकेट को डिटैचिंग हुक से अटैच किया जाता है और ब्रिडल चेन से अटैच करके या फिर क्लेवी चेन से अटैच करके दो बकेट्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे जो आप बकेट देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का होता है इसका शेप। ठीक है, अब इसके जो ये पोर्शन देखिए, ये है फॉर्क, दिस पोर्शन इज फॉर्क। ठीक है, फॉर्क, यू कैन से इट फॉर्क। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या होता है, ये जो बाहरी पोर्शन है, जो फॉर्क वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, ये यहां से ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। अब ये जैसे ही जमीन के नीचे जाता है ना, एज इट विल, इफ दिस forks will open then it will look like this, and after it reaches at the bottom then it will just collect all the material, blasted material under it, inside it. Okay, in this manner, it will collect the blasted material. We just have to slide it over the blasted material, it will collect the blasted material. After that these forks are closed and it will come to the original position like this, है ना। अब जैसे ही हम इस फोर्क को क्लोज करते तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और ब्लास्टेड मटेरियल इसके बीच में इस प्रकार से कुछ फंसा रह जाता है। द ब्लास्टेड मटेरियल विल रिमेन इनसाइड इट इन दिस manner. Now we will raise it and take it out and just unload it in the chutes. For unloading it, a special arrangement is provided over here. This is a special arrangement which is provided over here for unloading it on the chutes. Okay, now suppose this is your chute, this is your chute. If it comes over here, it will get tilted like this, in this manner. Okay, it will get tilted in this manner. And all the material will fall down. Okay, in the V shoots, due to this arrangement it gets tilted over here, है ना। V shoots में इस arrangement के कारण ये यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है और पूरा का पूरा मटेरियल इसमें से बाहर गिर जाता है। ठीक है, now we have to see the shaft centering arrangement. Okay, this is your shaft centering arrangement.
This is the shaft centering arrangement. Now let's start. Now we have to we have to check during while shaft sinking we have to check two things on daily basis. First of all, that is the verticality of the shaft, and the another thing is the radius of the shaft. Okay, you have to check this thing daily on daily basis. अब जब भी हम शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो दो चीजें हमें बेसिकली चेक करते रहना है. क्या क्या डेली डेली चेक करना है? क्या क्या? एक तो हमारा शाफ्ट वर्टिकल है कि नहीं, दूसरा हमारे शाफ्ट का रेडियस कितना है. ये दो चीज हम चेक करते रहते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम प्लम्ब ऑफ वायर को सरफेस से शाफ्ट के में सस्पेंड करते हैं. For this purpose, we used to suspend the plumb of wire from the surface in the shaft. Okay, light section rail rollers के ऊपर slide करते हैं. ठीक है, now just understand the arrangement. Now this is your ground level. This is your ground level. Okay, over here we used to make a floor at the decking level. This is your decking level. At this decking level, this steel plate floor is made. Okay, at the decking level, this steel plate floor is made. Okay. And this on this steel floor there are rollers. Okay, rollers are placed on this steel floor. On the rollers there is a sliding channel, or you can say that sliding rail is placed on the rollers. This sliding rail is supported with the help of the channels and having a channel in this manner. Okay, and the sliding, what we say, sliding section rail should not go in either side. For that purpose, U clamps are placed over here. U clamps are placed over here, so that this sliding rail should not go move like this in this manner. Okay, let me show you a quick video. Hopefully, I hope so that we must get the video. Let's hope that. As you can see over here, this is your section rail. Okay, this is your section rail, and these are your channels, and over these channels there is a U clamp placed over here. Are you able to see clearly or not? Okay, okay, it's clear. So U clamps are placed over it so that it should not fall like this, or it should not move like this. In this manner, it is placed over the section rails. Okay, just imagine basically uh, wait a minute, this is your section rail, and what is there, what was there, light section rail. This is your light section rail. Okay, U clamps are there for its movement, for stopping to prevent its movement and the sidewise. Okay, and after that rollers can be placed over here, but it is not placed over here. Rollers are there on which this sliding this rail section rail will slide, and it is supported with the help of these channels. It is supported with the help of these channels on which it moves basically. Okay, now
So easily one person can pull the gate. It's very lightweight. This is our sliding boom. Okay, and just imagine, in this sliding boom, at the front portion, I should hang a plumb bob wire, which will work as the shaft centering arrangement. Okay, now at this sliding boom I have just hang the plumb bob wire, which is attached to the winch over there. Okay, now it is at the center. Okay, and with the help of this only I could find out the center, or I could do the shaft centering. Okay, चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल लिंक चेन और जो भी ब्लास्टिंग का पैटर्न होगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थोड़ा गला ठीक नहीं लग रहा है. ठीक है, अगर और कोई डाउट्स हैं या और कुछ आपको बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं. लेक्चर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बताते जाइएगा. रिव्यू आप दे सकते हैं. ठीक है, तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा. और क्या कर सकता हूं ये भी आप बता दीजिए. क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो कल नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्वेश्चंस भी आपको करा दिया करूंगा. ठीक है. आई एम सॉरी, गला दर्द दे रहा है. नेक्स्ट टाइम बात करते हैं. ठीक है. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.